आदित्य कुमार हमारे साथ यहाँ पर मंच में। मिस सपना, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अब आपका वोटर कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। मंच पर आप खुशी और साथ साथ अब न्यूली एनरोल्ड वोटर्स, न्यू वोटर्स के लिए 4 क्वालिफाइंग डेट्स हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि 1 जनवरी को जो 18 वर्ष के हुए हैं उसके साथ साथ 1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर भी है। अब यहाँ पर मंच पर अजय दुबे। अजय दुबे और संचित शर्मा। And now, ladies and gentlemen, may I request the Honourable Minister and everyone to remain in front of the dais as we now roll out the red carpet for our awardees. तो देवी सज्जनों, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार और शुरुआत करते हैं राज्यों के लिए उत्कृष्टता पुरस्कारों से। सबसे पहले मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से, श्री किरण रिजिजू जी से निवेदन करती हूँ हमारे पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने का। सबसे पहला पुरस्कार दिया जाता है श्री सत्यव्रत साहू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु को। आपने वर्ष 2021 के दौरान तमिलनाडु राज्य में विधानसभा निर्वाचन को आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन और अन्य संबंध पहलुओं पर विशेष ध्यान देकर संचालित किया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्वाचनों का स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संचालन हो पाया। अगला पुरस्कार दिया जाता है श्री नितिन खाड़े, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम को। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद असम विधानसभा के साधारण निर्वाचन 2021 का सही मायनों में समावेशी, सुगम, नैतिक, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संचालन करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। और अब सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन पद्धति पुरस्कार, निर्वाचन पद्धति के लिए पुरस्कार दिया जाता है श्रीमती मुक्ता आर्य को, जिला निर्वाचन अधिकारी, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। निर्वाचन प्रबंधन के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की 100% व्यवस्था सुनिश्चित करने और परिवहन एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए आपके प्रयासों के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। We now have the Best Electoral Practices Award for Voter Education and Electoral Participation awarded to Shri Sumit Gupta, DEO, North 24 Parganas, West Bengal. Awarded for undertaking intensive voter education activities in low enrollment and low voter turnout assembly constituencies and polling stations for West Bengal Legislative Assembly Elections 2021. We now have for innovative measures awarded to Ms. Varnali Deka, DEO, Golpara. Awarded for consolidating persons with disability database for accurate identification and marking of such voters, increasing the PWD voters from 1,931 to 10,544, and for organizing portion clubs and also Divyang Sati app for the PWD voters. माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा जी को। We now have the Best Electoral Award, the special category for expenditure monitoring, and the award is presented to Shri Praveen Kumar, Director General of Income Tax Investigation. Awarded for curbing election malpractices with vigilant raids to monitor the movement of cash and valuables during election time, he conducted 83 searches in Tamil Nadu and Puducherry, seizing some 103 crore rupees of cash and valuables, and also developed strategies for the coordination among enforcement agencies.
The next we have the special award for security management being awarded to Shri Deepak Kumar Kedia, awarded for effective coordination with the Central Armed Police Force for smooth induction, deployment and dispatch, thus ensuring peaceful conduct of general elections of Assam Legislative Assembly 2021. We now have the Best Electoral Practices Award for IT Initiatives awarded to Shri V. Vishnu, DEO, Tirunelveli District, Tamil Nadu. Awarded for noble IT initiatives like Vakkuchavadi Vazikatti with 360-degree vigilance, enabling geotagging of all 1,924 polling stations in the district. A remarkable system to monitor social media and fake news was also developed for MCC and expenditure surveillance. अगला पुरस्कार दिया जाता है डॉक्टर के सेंथिल राज, जिला निर्वाचन अधिकारी थुथुकुडी जिला तमिलनाडु को मतदाता शिक्षा और निर्वाचन भागीदारी के लिए। आपको ट्रांसजेंडर, नारी कुरवार और वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के 100% नामांकन पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वीप अभियान का आयोजन करने और स्कूली बच्चों के माध्यम से पूरे जिले के निर्वाचकों को मतदाता जागरूक संदेश वाले पोस्टकार्ड भेजने के लिए सम्मानित किया जाता है। अगला पुरस्कार मतदाता शिक्षा और निर्वाचन भागीदारी के लिए दिया जाता है श्रीमती कीर्ति जली, जिला निर्वाचन अधिकारी कछार सिलचर को। गर्भ कछार मेगा और प्रोनोरेनी जैसे अभियानों का आयोजन करके मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए उठाए गए व्यापक कदमों के लिए, जिनके परिणाम स्वरूप 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग में निर्वाचनों की संख्या 6,923 से बढ़कर 27,780 हो गई। श्री सुशील चंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री राजीव कुमार जी को पुरस्कार देने के लिए। आईटी पहल के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाता है तकनीकी सलाहकार समूह टैग को। टैग के सदस्यगण हैं चेयरपर्सन प्रोफेसर रजत मूना, डायरेक्टर आईआईटी भिलाई, प्रोफेसर जी शिवा कुमार, प्रोफेसर आईआईटी बॉम्बे, श्री एच कृष्णमूर्ति, चीफ रिसर्च साइंटिस्ट रिटायर्ड आईआईएससी बैंगलोर, श्री आरएस मीना, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एनआईसी दिल्ली। मंच पर प्रोफेसर रजत मूना और आरएस मनी पुरस्कार को ग्रहण करते हुए अनेक मुद्दों पर भारत निर्वाचन आयोग, सीडैक और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने, एरोनेट प्रणाली के निष्पादन में सुधार लाने और भारत निर्वाचन आयोग की आईटी आर्किटेक्चर के विभिन्न पहलुओं पर समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। और अब एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाता है श्री पीएस शिवशंकरन को, अपर आयकर निदेशक, अन्वेषण तमिलनाडु और पुडुचेरी। निर्वाचन अवधि के दौरान नकदी और कीमती वस्तुओं को लाने और ले जाने पर नजर रखने के लिए सतर्कता पूर्वक छापेमारी कर निर्वाचन कदाचार पर रोक लगाने के लिए और एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच समन्वय की तरफ आपकी कार्यनीतियों के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। We now have the special award for the rationalization of polling materials, and this is being awarded to Shri Pratik Dayal, Sub-Collector, Chiran Mahadevi, Tamil Nadu. Awarded for developing a mobile application, Ambai Therdal Perumai app, that's a personal management and information system that provided assistance to the polling personnel. निर्वाचन प्रबंधन के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाता है श्री सुशील कुमार, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, राजसमंद, राजस्थान को। निर्वाचन नामावली में दिव्यांग मतदाताओं की पहचान करके नामांकन करके उन्हें चिन्हित करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक महीने की अवधि में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,728 से बढ़कर 3,177 हो गई। And now we have the Best Electoral Practices Award for Election Management being awarded to Ms. Mrinmay Joshi, DEO, Palakkad, Kerala. Awarded for coordinating with various departments and conducting manual comparisons of electoral rolls in Palakkad district. Also, numerous activities were conducted in the local tribal languages to boost tribal participation. श्री राजीव कुमार जी का धन्यवाद। और अब मैं श्री अनूप चंद्र पांडे जी से निवेदन करना चाहूँगी पुरस्कार देने के लिए। We have now the National Award for Government Department, PSUs and Agency for Voter Awareness across the country, and this is being awarded to Shri Satyendra Prakash, Principal Director General, Bureau of Outreach and Communication, Ministry of IV, Government of India.
awarded for organizing interpersonal communication programs on voter awareness and education through various media, such as mobile exhibition vans, photo exhibition, online contest, and the others in poll-going state amidst COVID pandemic, helping in enhanced voter education and participation. और अब राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार, मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार दिया जाता है श्री मानस प्रतिम शर्मा, आरएनयू हेड आकाशवाणी गुवाहाटी असम को। असम राज्य में आकाशवाणी के सशक्त नेटवर्क के माध्यम से निर्वाचन जागरूकता से संबंधित कहानियाँ और अन्य गतिविधियों के लिए समाचार बुलेटिन, वाद विवाद, चर्चा, फोन इन कार्यक्रमों के सहित मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का कुशल संचालन कराने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। And we now have the Best Electoral Practices Award for Security Management being awarded to Shri Kamnashish Sen, SP, Baruipur South, 24 Parganas, West Bengal. Awarded for implementing a drone monitoring system to ensure sharp vigil during the West Bengal Legislative Assembly elections in 2021. The drone monitoring system has now been included in the Micro Mission National Police Mission Bureau of Police Research and Development. और अब निर्वाचन प्रबंधन के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाता है श्री बी थिलाईवेल, डेप्यूटी सीईओ पुडुचेरी। आपने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाया और प्रत्येक मतदान केंद्र पर 100% अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध कराई। आपके प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुडुचेरी विधानसभा के साधारण निर्वाचन 2021 में 83.28% मतदाताओं ने मतदान किया। And we now have the special award for Electoral Literacy Club being presented to Shri J.L. Gupta, Officer on Special Duty to the CEO, Delhi. Awarded for strengthening electoral literacy clubs through regular training of all the EROs and DOs, held numerous interactions with CII, with the students and the heads of the educational institutions, thus establishing a maximum number of ELCs and WAF in Delhi. तो सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत-बहुत बधाई, मुबारकबाद, thanking the Honorable Minister and the Commission for presenting these awards. And ladies and gentlemen, apart from these, we also have some of the award winners who could not join us in the award ceremony, but we would also like to congratulate them and also mention their names here. सुरक्षा प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन पद्धति पुरस्कार दिया जाता है श्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, बीरभूम, पश्चिम बंगाल को। उनको बहुत बहुत बधाई। सुरक्षा प्रबंधन के लिए सम्मानित किया जाता है श्रीमती निहारिका भट्ट को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, कराईकल, पुडुचेरी। और स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सेसिबल इलेक्शंस अवॉर्डेड टू मिस जीजा घोष, स्टेट आइकॉन, वेस्ट बंगाल। तो एक बार पुनः सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग नहीं आ पाए उनको उनका पुरस्कार भेज दिया जाएगा। And now I would like to humbly request the Honorable Chief Election Commissioner of India, Shri Sushil Chandra ji, who has been leading the Election Commission of India since April 2021, with his iron will to work in spite of the challenges. I request him for his views and interests on this important occasion of NVD 2022. Honorable Minister of Law and Justice, Shri Kiran Rijiju ji, my fellow commissioners, Shri Rajiv Kumar ji and Shri Anup Chandra Pandey ji, Honorable former Chief Election Commissioner, Shri Naveen Chawla ji, Honorable Shri Sunil Arora ji, Shri Umesh Sinha, the Secretary General, and other colleagues from the Commission, Honorable representatives of the political parties, friends and media, ladies and gentlemen. First and foremost, I wish to congratulate all the citizens of our country on the occasion of 12th National Voters' Day. On this day, Election Commission of India was founded a day prior to India becoming a republic. Right to vote is one of the most basic elements of democratic citizenship, both essential and universal.
In many parts of the world, this right was achieved after a long and bitter struggle. India, however, chose a very different path. The right to vote was bestowed on every adult citizen of India at the same time as India won her freedom. For a newly independent country with the literacy rate of 18%, this was a truly radical move and a leap of faith by the framers of Constitution. I quote the verse of Dr. Rajendra Prasad, quote, "Some people have doubted the wisdom of adult franchise. Personally, although I took upon it as an experiment, the result of which no one will be able to forecast today, I am not dismayed by it. I am a man of the village, and although I have had a life in cities for a pretty long time, on account of my birth, my roots are still there. I therefore know the village people who will constitute the bulk of this vast electorate. In my opinion, our pupil possesses intelligence and common sense. They also have a culture which the sophisticated people of today may not appreciate, but which is solid." Unquote. Dr. Rajendra Prasad, President, Constituent Assembly, 26 November 1949. This year we are celebrating 75th year of India's independence. It is time to look back and see how, against all odds, India emerged as a strong and robust democracy. It is time to pay tribute to the millions of voters who are the very sinews of our democratic framework. I believe that every poll day, when citizens queue up at the polling stations to cast their vote, is a voter's day in itself. Election Commission of India proudly dedicates the National Voters' Day to each and every voter of India. The theme for this year's NVD is Making Elections Inclusive, Accessible, Participative. This theme conveys that democracy in a meaningful only when there is an equal and free participation of all. These are humanistic ideals which cannot be seen in isolation. I recall the concluding remarks of Dr. B.R. Ambedkar, who was also India's first law minister in the Constitution Assembly of November 25, 1949, quote, "These principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to diverse one from the other is to defeat the very purpose of democracy." So this equal participation is one of the most important things as far as elections are concerned. Just to give an idea of the long journey we have traveled together with our voters on the path of democracy. When the first general elections were conducted in 1951, there were only 17.3 crore voters. During 2019 elections, the number of voters was around 91 crore, and today there are more than 95.3 crore voters, of which 49 crore are male voters and 46 crore are female voters. Among these registered voters, there are 1.92 crore senior citizens, aged 80 plus, 81.39 lakh persons with disabilities, 19.24 lakh service voters, and 1.37 crore newly registered voters. Behind this big data, there are a number of human stories of innovation, of grit and determination, of placing duty before self, or belief in the ballot. Whether it is polling team in Anjwa, Arunachal Pradesh, which traveled in hilly terrain 300 miles, 4 days for one voter, or a team Zara, which was stranded after poll for 20 days due to bad weather, but they got the election conducted. On this NVD, I wish to express gratitude to all the field functionaries, booth level officers, security personnel, and members of CAPF. Without your support, we cannot conduct elections. In the last 2 years, many of the field functionaries and their families got infected with COVID, yet they returned to perform their duties and did not let the conduct of election suffer any disruptions. Election Commission of India has made tremendous efforts in 2 directions: one, to increase and facilitate registration of voters, and second, making polling stations a space more conducive, comfortable, and accessible. Several initiatives have been taken to increase the participation of women, persons with disabilities, and senior citizens.
which are core of the election process. This has been our focus area and it has brought good results. The number of women voters during general elections 2019 was 43.85 crores, which has increased to more than 46 crore now. Due credit for this must be given to all our women folks, the women booth level officers who talk to the women folk in their own language and convince them to participate in elections. We also ensured that polling stations were located closer to habitation, besides better facilities like separate toilets, creches, etc. We also set up all women-managed booths. In the current elections also, which we are going to hold, 1,620 such all women-managed booths are being set up across the 5 states. This gives a sense of empowerment to the women who have been registered as a voter. ECI has made consistent efforts and has gone that extra mile to empower and facilitate the participation of senior citizens and persons with disabilities. Having coordinated with several departments, NGOs, and obtaining data from them, we have mapped more than 77 lakh persons with disability till now. ECI has streamlined various initiatives like ramps, wheelchair, and volunteer assistance, Braille Epic card, free transport to and from polling stations, priority voting, and provisions of assured minimum facilities at the polling stations. ECI's PWD app helps such voters to get enrolled and get access to special facilitation services. All polling stations are now situated on ground level, and this credit goes to Mr. Sunil Arora, who is sitting here as a former CEC, who ensured, in spite of all opposition from the field, that all polling stations should be on the ground floor. So, sir, this is your contribution, a special contribution, and one of the contribution to the Commission. To spread the message of empowerment, PWD icons are appointed by the Commission. In every election, we set up some booths that are exclusively managed by persons with disabilities. Continuing our resolve that no voter is left behind, Commission brought the polling booth to the doorstep of those who find it difficult to go to the polling booths to cast their vote by offering them the option of postal ballot. Virtually, we have brought the ECI at the doorstep of those persons who cannot cast their vote because of the age, disability, or COVID infections. This new facility is now offered to all voters aged 80 plus, persons with disabilities, and those who are COVID affected and quarantined. Friends, getting citizens to register is one thing. Getting them to the polling station is another important area. It needs a different strategy altogether. ECI has been constantly trying to improve the polling station environment by providing better infrastructure, provision of all facilities like electricity, drinking water, toilets, waiting area, ramps for PWDs, and place to sit for the elderly. Targeted interventions are undertaken through sweep in areas with low voter turnout in order to increase participation. The Commission has identified the polling areas, the polling booths where the voter turnout is less, and we are trying through various measures, including the sweep interventions, that the persons can be motivated to cast their vote freely. They should come forward so that the voter turnout can be increased. Until and unless everybody participates in the voting process, until the turnout is more, the democracy cannot be strengthened. As you know, the sudden impact of COVID-19 presented an unprecedented situation before the Commission. We had to ensure the safety of both the vote and the voter. Amidst the pandemic, elections to 6 state assemblies, besides many by-elections, were conducted with full health and safety measures in place. World over, there were apprehension that COVID-19 would lead to low voter turnout. However, the determined Indian voter, with unflinching faith in democracy, defied naysayers and skeptics and came out in large numbers to vote in all elections held during the pandemic. I'll give you the turnout of the other states which went to the polls in pandemic. The voter turnout in Bihar was 59.7%, which was more than the last elections. Assam, 82.42%. Tamil Nadu, 73.63%. Kerala, 76%. West Bengal, 82%. And Puducherry, 83%. So this showed that the persons were not deterred. Their communication was proper, that the polling booths are safe.
they were absolutely explained that all arrangements of the COVID compliance behavior are there on the polling booths, and I am very happy to say that the voters complied with all protocols, and they came out in large numbers to cast their votes, because of which the percentage is so high. And in some of the states, the women turnout was much more than the man turnout. Friends, it is equally essential to curb the influence of money and muscle power in elections. Efforts should be made by society as a whole, not only by the Election Commission, but by the whole society as a whole, that people with criminal antecedent are discouraged from participation. For this, Commission has recently launched the Know Your Candidate app, which provides voters with information about candidates, including their criminal antecedent, to enable voters to make an informed choice. Ultimately, it is a choice of voter, but all data regarding the candidate is being provided by this app, as well as by the various websites of the political parties and the website of the Commission. As far as inducement-free elections are concerned, that is one of the important motto of the Commission. And for that, various measures like appointing of the expenditure observers, like curbing of the cash flows, curbing of the liquor, curbing of other types of that inducements which can influence the voters are being taken, and very strict directions have been given to the field also to stop all these practices. Every year on NVD, we also give NVD awards on various areas of election management to individuals and organizations who have rendered yeoman service in furthering the cause of democracy and elections in India. This year, too, all such elections heroes have been felicitated just before now, and I congratulate all such persons who have kept duty before the self and make all the voters proud, and they have done really a tremendous job during this COVID period and performed their duty very well. I really congratulate all of you. Friends, election process is underway in another 5 states of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, with 690 assembly constituencies, 18.3 crore voters across 2.5 lakh polling stations. Commission has issued stringent guidelines to be followed by all political parties and candidates. We have also emphasized upon increasing the pace of vaccination in all poll-going states, and all arrangements will be made to ensure that this election is absolutely safe. I will definitely appreciate the work and the efforts of the political parties also in this regard, that they have been avoiding the COVID-appropriate behavior during these elections, and they are also becoming an example to others as to how the COVID behavior should be followed properly. And I need your full support for these ensuing elections which are coming in the next months only. Today, the 2 books were launched, and one was Leap of Faith. I would like to mention here that this book, the idea of this book was conceived again by Sri Sunarwala ji, who was the earlier CEC. As after completion of our all elections in the COVID, he thought that a book can be put in which the efforts of the persons who have done the work during COVID should be highlighted. And the Leap of Faith was also coined by him. I really am thankful to you for giving that particular name to this book. Once again, I congratulate the voters of the country, especially the new voters, the women, the senior citizens, and PWDs. We cannot thank you enough. Whatever be the situation, your unflinching faith in the ECI and your belief in the democracy has been steadfast. I am immensely grateful to Honorable Vice President of India for accepting our invitation as a chief guest at the National Voters' Day, whose message will be played right now. I am thankful to Honorable Minister of Law and Justice, Shri Kiran Rijiju, for sparing his valuable time and joining the NBD celebrations. My thanks to all members of political parties for being here with us today. And I'm really grateful to the former CECs once again for being with the ECI family. I'm thankful to the media who came in large number and helped us and to spread our message till the last mile, till the last voter of this country. Thank you so much to all of you. Jai Hind. Thank you. Thank you very much, sir, for your very comprehensive address, congratulating and appreciative
message for all the awardees and the former CECs and everyone, and also giving us an account of the various consistent efforts which the Election Commission of India has been taking and continues to take towards making the elections not only more inclusive, accessible and participative, but also being organized in a very safe and secure environment and free and fair elections. Thank you, sir. और अब देवी सज्जनों, मैं आज के हमारे विशेष अतिथि हमारे माननीय केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से निवेदन करती हूँ। किरण रिजिजू जी जो कानूनविद हैं, आप सभी जानते होंगे, ही इज़ अ ग्रेजुएट इन लॉ, लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ साथ जानकार हैं। उनसे करबद्ध निवेदन है कि हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने के लिए। Sri Sushil Chandraji, Honorable Chief Election Commissioner, Sri Rajiv Kumarji, Honorable Election Commissioner, Sri Anup Chandra Pandeji, Honorable Election Commissioner, and both former Chief Election Commissioners, Chawlaji and Aroraji, our representatives from various political parties, Umesh Sinha ji, Secretary General, Dharmendra Sharma ji, Senior DEC, National Award winners, future and new voters, media friends, ladies and gentlemen. First of all, I would like to extend my greetings to every fellow Indian on this very important National Voters' Day. This is the 12th occasion we are observing National Voters' Day. We all know the Election Commission of India has a glorious history of 70 years journey, and we also know that it has transformed itself in the process. With the addition of new challenges, Election Commission of India has been aptly handling all the new opportunities and challenges both. I would like to extend special greetings and congratulations to all the new voters. It is very exciting to be a voter in India. Sometimes we don't realize the importance of being a voter in India. Being a voter in the largest democracy means you are part of the democratic process in the largest democracy of the world. Although it is a voting right, but for me, I always consider this voting right is a voting privilege. And this privilege, we should dearly hold it. Sometimes I also feel that to be a voter in India and to hold that card, the voter ID card, that card is the most important document in India. No other documents can render you the power and privileges that the voting card, the voter ID card can offer you. So we should celebrate it. So the young voters who are going to get this new voting ID card, please celebrate, understand the value of it. It's not the question of only voting to a person or a political party, but we are strengthening Indian democracy. The Election Commission has announced many awards, but for me, I would like to honestly say that the real award goes to the Election Commission of India. You have done a wonderful job. Both the former election commissioners are here, and so many of the people whom we have worked with,
I have always said that I have fought 7 elections. Although I may not look that old, but I have already fought 7 elections, and I have come across many dedicated election officers, be a porter, be an election officer on the polling day, observer, or be election commissioner. I have dealt with so many, but I must say one thing, the amount of dedication every member of the team puts in, that makes Indian democracy successful. We celebrate and we normally talk about Indian democracy and the success of Indian democracy, but the root cause of the success of Indian democracy is the successful electoral system in India. Without successful election, democracy just cannot sustain. Recently, we passed some amendments in the parliament. Due to so much of ruckus and problems in the parliament, I was handicapped that I could not explain. I wanted to speak at length about the benefits of the 4 amendments which we have brought in the election laws. But there were issues in the parliament. Don't worry, I'm not going to explain here in detail. मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम कहना चाह रहे थे और जो इलेक्शन कमीशन ने जो मेहनत किया और जो हमारे मंत्रालय के हमारे सेक्रेटरी मैडम और पूरा टीम यहाँ है डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांच के, जो तालमेल किया, वो लोगों तक जाना चाहिए। जब कोई अच्छा काम होता है और अच्छा काम के पीछे जो लोग लगे हुए हैं उनका चेहरा भी तो आगे आना चाहिए कि सुशील चंद्र जी, आपके दोनों कमिश्नर्स और टीम ने क्या किया है, वो भी अगर मुझे 2 मिनट या 10 मिनट अगर पार्लियामेंट में बताने का मौका मिलता तो मुझे भी बहुत खुशी होती। तो आपका अच्छा काम मुझे पार्लियामेंट के फ्लोर में बोलने का मौका नहीं मिला, इसके लिए मैं ज्यादा दुखी हूं। लो तो चलो पास हो गया, कम चर्चा किया, हमने पास कर दिया, अच्छी बात है। आपके टीम हमारे ऑफिस में बहुत बार आए और आपके इलेक्शन कमीशन के टीम और मेरे मंत्रालय के सारा अधिकारी आपस में रेगुलर टच में रहते हैं। मैं खुद 3 बार रिव्यू मीटिंग लिया और आगे भी जाकर के बहुत और रिफॉर्म्स लाना है। इसका कोई यहाँ मुझे जिक्र करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे मन में भी बहुत इलेक्शन रिफॉर्म्स का चीज सोचा हुआ है और आपके मन में भी है। और इलेक्शन कमीशन और हमारे विधि और न्याय मंत्रालय के बीच में जो तालमेल है, ये अच्छा तालमेल ऐसे ही बना के अगर हम रखेंगे तो हम बहुत जल्द जो भी रिफॉर्म्स लाना है वो हम ला सकते हैं। हम ये हमेशा मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम सबको अपना अपना रोल डिफाइन किया हुआ है, हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन तालमेल नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा। मैंने जुडिशरी के जितने टीम को भी यही बात मैंने दोहराया है, सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सारे हाई कोर्ट के जजेस, सबको भी यही कहा कि देयर आर लाइफ बियॉन्ड फाइल्स एंड फॉर्मेलिटीज। तालमेल होना चाहिए। हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के नाम में आपस में तालमेल नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, देश कैसे चलाएंगे। तालमेल बहुत अच्छी तरह रहना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इंटरफेरेंस हम नहीं करेंगे। अपने अपने सीमित बाउंड्री में रह करके अच्छा टीम के साथ, अच्छा स्पिरिट के साथ काम करना है और रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर कोई इलेक्शन कमीशन को कोई क्रिटिसाइज करता है, डेमोक्रेसी में ठीक है, क्रिटिसाइज करने का राइट है, लेकिन भाषा का मर्यादा। अगर कोर्ट इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ कहता है, कह सकते हैं, कोर्ट के पास अधिकार है, लेकिन कोर्ट के जजेस को भी सोचना होगा कि क्या भाषा यूज कर रहे हैं आप। इलेक्शन कमीशन में जो काम करते हैं वो भी किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, उसका भाव को समझना चाहिए। कमेंट पास करना आसान है, उसके पीछे जाकर के उसका तकलीफ, बैकग्राउंड को समझना ये आसानी नहीं होते हैं। आजकल हम लोग कहते हैं कि
सब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में लगे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन में लगे हुए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन सक्सेसफुल है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी योगदान है, लोग भारत की जनता का भी योगदान है। विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, नथिंग कैन सक्सीड। ये है। तो इसीलिए अगर इलेक्शन कमीशन को लोग अगर तीखी आलोचना करती भी हैं, लेकिन एप्रिसिएशन भी करते हैं, दोनों है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम आलोचना करते हैं तो उसमें तथ्य होना चाहिए। देयर आर एफर्ट्स टू डिस्क्रेडिट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया's effort. The steps and those elements whichever try to discredit election commission of India are actually trying to discredit the democratic process of our country. अगर इंडिया का डेमोक्रेसी को चैलेंज करना चाहता है तो उसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि इलेक्शन कमीशन को ही चैलेंज करो, क्योंकि इलेक्शन का जो प्रोसेस फ्रॉड है तो इट इज एक्चुअली अ फ्रॉड ऑन द डेमोक्रेसी। फुल प्रूफ नहीं हो सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स का जगह होता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो समय समय पे जैसे चैलेंजेस को हैंडल किया है, उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करने का बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जो कोविड-19 आया, बहुत लोगों ने सोचा है कि इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, कोविड आ गए हैं, इलेक्शन डेट आ गई है, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स कि इतने दिन में इलेक्शन होना चाहिए और सरकार का गठन होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आने नहीं दिया। एक दो स्पेशल रिलैक्सेशन के लिए हमारे पास फाइल आए, हमने किया। हाँ, कोविड के चलते देयर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, हमने कुछ रिलैक्सेशन किया है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है उसको पूरा किया है। तो ये कोविड जैसे चैलेंज में काम करना, और अगर अभी इलेक्शन कमीशन कुछ किताबें ला रहे हैं सक्सेस स्टोरीज, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ऐसा जो पोलिंग स्टेशंस है वहां इलेक्शन कराना आसान नहीं है। एक जगह है वहां 2 वोटर थे और 2 वोट लेने के लिए 10 लोग जाते हैं, तो वोट 2 है लेकिन पूरा टीम जाते हैं, लेकिन वहां कोई वायलेंस नहीं है, तो कोई सिक्योरिटी लोग नहीं जा रहे हैं, एक मुश्किल से जाते होंगे, अदरवाइज तो पूरा टीम जाएगा तो 50 लोग जाना पड़ेगा। और कई ऐसे भी जगह है कि वहां पहुंचना मुश्किल है। कुछ कहानी है, मैं कहानी यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें कई जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं अपना जान तक गवाया है। कितने आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, कितने इलेक्शन जो ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन के ऑफिशियल टीम के मेंबर्स अपने ड्यूटी के समय अपने जान गवाया है। तो उनके लिए मैं समझता हूँ आगे भी याद हम लोग को करना चाहिए। अगर अवार्ड उनके लिए भी पोस्टुमसली भी हम लोग याद करना है तो करना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन मेनी डेडिकेटेड ऑफिसर्स, दे गेव देयर लाइफ टू कंडक्ट ए सक्सेसफुल इलेक्शंस। मैं और ज्यादा तो कहने नहीं चाहता हूं, लेकिन 1-2 बातें हैं। जो अभी जो 4 इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है ये यंग वोटर्स है। अभी हमारे तीनों इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जिक्र किया है। पहले जो एनोमली था, मैं इसको सोच रहा था कि ये दिमाग में पहले क्यों नहीं आया या हमने एफर्ट क्यों नहीं किया, कि बोलता तो है कि आप 18 साल हो गए हैं, आपको वोटिंग राइट मिल गया है, लेकिन वोटिंग राइट तो कहां मिलता था बताइए। यू हैव एक्चुअली बिकम एन एलिजिबल वोटर बाय crossing 18 years of age, but there was no process that there was no provision that you can be included as a voter. तो मैं भी जब मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बनने के बाद ये मेरा दिमाग में भी आया कि 18 साल हो गए हैं लेकिन आप वोट नहीं डाल सकते हैं। तो पहला तो मैंने कहा था, जब ये हमारे चंद्रभूषण पूरा टीम आए थे, मैंने कहा कि जब उसका क्वालिफाई होता है उसी दिन वोटर लिस्ट क्यों नहीं होना चाहिए। When you are 18 years old,
immediately you must have the entitlement to vote. फिर there are some administrative challenges, तब जाकर के ये 4 qualifying dates आया. इसी प्रकार से जो जेंडर न्यूट्रल लॉ है, आप सोचिए हमने वहां वाइफ डाल के रखा हुआ है, हस्बैंड का कोई जगह ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसलिए इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया. कभी कभी पुरुष होना भी थोड़ा मुश्किल बात है, लेकिन हम लोग उसको झेलने का ताकत भी रखते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं कहूंगा. लेकिन जेंडर न्यूट्रल जो है, इसको लगता है कि छोटा सा एक ये अमेंडमेंट बिल है, लेकिन छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट हमने किया है. इसी प्रकार से जो इलेक्शन प्रोमिसेस का लेकर के और सबसे बड़ा जो आधार को लेकर के पॉलिटिकली जिसका विवाद बनाया गया है, वो तो जब पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि एक आदमी एक जगह से ज्यादा 2 जगह 2 सूची में नहीं हो सकता है नाम, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये आधार वाला सबसे इफेक्टिव है. और इसके अलावा भी मैंने तो उस समय कहा है कि किसी के पास में और भी सुझाव है तो वो भी दीजिए. It is basically furthering the provisions there in the People's Representation Act. We are a team. We may be from different political parties, but मिलके काम करना है. तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन के टीम और हमारे सरकार, खास करके हमारे जो डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा तालमेल के साथ जो काम कर रहे हैं. मैं भी बहुत खुश हूँ. और आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं तो एक अच्छा टीम भावना, टीम स्पिरिट के साथ हम आगे भी काम करेंगे. पुनः मैं आज जो अवार्ड विनर्स हैं, स्पेशली जो स्टेट से जितने भी जो टीम आए हैं, मैं आपको खास करके बधाई देना चाहता हूँ. बिकॉज यू हैव बीन गिवन सम अवार्ड्स, बट द मोर इम्पोर्टेंट अवार्ड इज द स्पिरिट in which you have carried forward your election duties. And you deserve special salutation from the people of the country for making all of us proud as a successful democracy. Once again, I pay my tributes to all those people who have given up their lives, who sacrificed their lives to conduct successful election. And again, thank you, Election Commission, for organizing this wonderful event. All the organizers, members of this organizing committee team, media team, and my last but most important congratulations message to all the young new voters of India. Be proud of being an Indian voter. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Honourable Minister, sir, for your very inspiring address, congratulating not only the new voters, but also the Election Commission of India for the various initiatives which it has been taking, also raising certain concerns and talking about the amendments which have been made, and also very valuable suggestions which you gave. बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उत्साहवर्धक संदेश के लिए. और यकीनन ऐसे उत्साहित शब्द सभी में एक नई ऊर्जा, एक शक्ति जागृत करते हैं, साथ साथ पल पल संबल भी बढ़ाते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. And ladies and gentlemen, as you know that the Honourable Chief Guest of today is Shri M. Venkaiah Naidu ji, the Honourable Vice President of India. And as stated earlier, due to health reasons, he's not been able to attend this function, but he has sent across his message in Hindi as well as English, which we are going to be playing for all of you. If you can have the message, please. मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त गण, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को और सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई देता हूं, जिसका आयोजन कल विधिवत किया जाएगा. देश में आयोजित चुनावों के 70 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस भी मना रहा है. साथ ही राष्ट्र लंबे और कठिन संघर्ष के बाद अर्जित आजादी का 75वां वर्ष भी मना रहा है.